गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2021-2022। मिनिस्ट्री ऑफ ये आपके गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिपोर्ट निकाली है, एनुअली निकाली जाती है 1992 से। तो बेसिकली कंट्री में एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसका ये डेटा प्रोवाइड करती है हर साल 31 मार्च तक का। तो स्टेट्स और यूटीज़ जो हैं वो अपने हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जो है डेटा अपलोड करती हैं, उसके बेसिस पर ये डेटा जो है दिया जाता है। और ये पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो है ये HMIS पोर्टल देता रहता है, जिससे कि लोगों को ये पता लग सके कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री में वो किस तरह का है। ठीक है। तो इस बार की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि पहले तो आप क्लासिफिकेशन समझो कि एक सब सेंटर को कहा जाता है कि वो 3,000 से 5,000 की पॉपुलेशन को जो है हेल्थ सेंटर जो आपका सब सेंटर होगा वो 3,000 से 5,000 की पॉपुलेशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, छोटा क्लिनिक मतलब। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं जो 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो 80,000 से 1,20,000 तक की पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं। और जो है रियलिटी ये है कि जो हर एक सब सेंटर है वो 5691 पॉपुलेशन, जो आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो 36,000 के आसपास की पॉपुलेशन, और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो लगभग 1,64,000 के आसपास की पॉपुलेशन को केटर कर रहा है। तो इसका मतलब जितनी जो रिकमेंडेशन है, जितनी जो नॉर्म है, उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं वो, बिकॉज इतनी कमी है हमारे यहाँ पर सब सेंटर्स की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की। अर्बन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं कि 18.8% डॉक्टर्स की, 16.8% फार्मासिस्ट की, ऐसे ही लैब टेक्नीशियंस की और स्टाफ नर्सिस की वैकेंसीज हैं। ऐसे ही जो है 50% राइज देखने को मिला है एलोपैथी डॉक्टर्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। और एक्यूट शॉर्टेज है कंट्री में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की। फीमेल हेल्थ वर्कर्स, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइव्स, इनकी भी जो है वो शॉर्टेज देखने को मिली है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। पॉलिटी के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ, और उसका एंड जो हुआ उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया अटेंडिंग मेंबर्स द्वारा। अब इस रेजोल्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि जुडिशियल ओवर रीच को रोकना चाहिए, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना चाहिए, जुडिशरी को ओवर रीच नहीं करना चाहिए। फिर अब उन्होंने इस रेजोल्यूशन में जो अडॉप्ट किया गया उसके हम कुछ कंटेंट देख लेते हैं। तो इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, ताकि सब जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो मतलब लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, ये तीनों ही जो है अपने अपनी बाउंड्रीज में काम करें। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का जो है लॉ मेकिंग, जो लोगों की चॉइस है, मतलब अब आप लोग जो है इलेक्ट करके अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हो, तो एक तरह से लोगों की चॉइस है ना, वो इलेक्टेड जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जो है प्रिमेसी ऑफ द पीपल, जो उसमें फेथ होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, अब ये इशारा किस तरफ हुआ है, ये इशारा हुआ है एनजैक की तरफ, जो कि जुडिशरी ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। पार्लियामेंट ने पास करके भेजा लेकिन जुडिशरी ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये बोलकर कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है। तो एक तरह से इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि प्रीमेसी ऑफ द पीपल, जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी प्रीमेसी को भी आप ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से इशारा किया गया है। अब इसी जो है रेजोल्यूशन में कहा गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट लाने की ज़रूरत है, ताकि जो लेजिस्लेटर्स हैं वो बिहेवियर अपना अच्छा रखें, उसको रूल्स में ही मेंशन करने की ज़रूरत है, और उसको टाइम टू टाइम कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू किया जाना चाहिए। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा है कि कंसेंसस बनाओ कि कोई भी डिसरप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हाउस में, क्योंकि ऑफकोर्स पब्लिक का पैसा खर्च होता है पार्लियामेंट चलाने में, और उसमें जब डिसरप्शंस होती हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो पब्लिक का पैसा करोड़ों रुपया जो है वो वेस्ट जाता है। तो अब जो है और भी जो है कुछ रेजोल्यूशंस में अडॉप्ट किए गए हैं, जैसे कहा कि इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह हम पेश करेंगे जब इंडिया जो है ये ऑन गोइंग G20 प्रेसिडेंसी में। तो ये भी कुछ जो है वो रेजोल्यूशंस जो है वो लिए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं। तो ये ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 1921 से चल रही है, तो लगभग जो है 100 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी कंट्री के जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर्स हो, उन सब की एक तरह से एपेक्स बॉडी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 12th और 13th जनवरी को इंडिया ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को जो है वो जो है एक तरह से होस्ट किया है।
और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने कहा है कि हम आपकी जो वॉइस है वो हमारी वॉइस है और आपकी जो प्रायोरिटी है वो हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है। तो ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज़ हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से चूक गई थी, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर पाई। एशिया की, अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की वो कंट्रीज़ हैं। और ये ग्लोबल साउथ मूवमेंट जो है ज़ापाटिस्टा रिवोल्ट मेक्सिको में जब शुरू हुआ, या अफ्रीकन रेनेसां इससे जोड़ा जाता है इसको, या फिर जब वर्ल्ड सोशल फोरम जो है वो ब्राज़ील में लॉन्च किया गया था, तब उसमें उस टाइम पर ये जो है शब्द का इस्तेमाल किया गया। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बहुत इंपॉर्टेंस इसमें रखी गई है। रशिया यूक्रेन वॉर में ग्लोबल साउथ का बहुत इंपॉर्टेंस सामने आया है, क्योंकि ग्लोबल साउथ ने क्या बोला है कि आपकी जो सुपर पावर राइवलरी है उसमें हमें कोई फर्म स्टैंड लेने की जो है वो मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, हम किसी भी कैंप को में शामिल नहीं होना चाहते हैं। अब ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है क्या? इनिशिएटिव है इंडिया का ये, और इसमें जो है इंडिया का रोल एज करंट G20 प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया उसको लिवरेज कर रहा है। इस साल के समिट का जो थीम है वो है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। इसी समिट में पीएम मोदी जो है उन्होंने आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने मेडिकल सप्लाईज दी थी ना कोविड के टाइम पर, वैसे ही हम कंट्रीज़ को जो है नेचुरल डिजास्टर्स और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के टाइम पर भी जो है ये जो है मेडिकल सप्लाईज देंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स। आपके इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जो है भीम यूपीआई को जो है नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स के लिए भी जो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है, कुछ कंट्रीज़ के ऑफ कोर्स। ठीक है। वो अपने जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होंगे वो अपने ही मोबाइल फ़ोन पर, अपने जो इंटरनेशनल मोबाइल फ़ोन जहाँ पर भी वो रह रहे होंगे उससे जो है भीम यूपीआई को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की जो है रेगुलेशंस उन पर भी लागू होंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन से अकाउंट्स होते हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस खुलवा सकते हैं इंडिया में। तो पहला होता है एनआरई अकाउंट। एनआरई का मतलब क्या होता है? नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट। अब इसको भी जो है एनआरआईज खोल सकते हैं, और उसी कंट्री में खोल सकते हैं जहाँ पर वो जो है काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर वो रहते हैं। लेकिन इंडियन रुपी में ही उस अकाउंट में जो है वो पैसा जमा होगा, उसमें ही ट्रांजैक्शन होगी। इसमें से जो विड्रॉल होगी उस करेंसी में उसको विड्रॉ किया जा सकता है जिसमें इंडियन जो है नेशनल जो है वो रह रहा है। मतलब अगर आप समझ लो जो है दुबई में रहते हो तो आप जो है दिरहम में जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। और जो आपका लेकिन अकाउंट होगा वो इंडियन रुपी डिनोमिनेशंस में होगा। इनकम जितनी भी जनरेट होती है एनआरई अकाउंट से वो टैक्स फ्री होती है। एनआरओ अकाउंट क्या होता है? इसमें जो है ये एक एनआरओ अकाउंट है, एक एनआरआई खुलवाता है इंडिया में, क्योंकि क्या होता है कि जो भी उसकी इनकम इंडिया में जनरेट हो रही है वो उसमें जो है जमा कर सकता है। जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कोई भी, जैसे समझ लो उसका कोई यहाँ पर कोई घर है, या उसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो उसको डिविडेंड मिल रहे हैं, तो उसको एक तरह से ये एनआरओ अकाउंट में वो पैसा रख सकता है। ठीक है। इसलिए जो, क्योंकि इंडिया में इनकम जनरेट हो रही है तो इसलिए जो इंटरेस्ट उस पर मिलेगा वो टैक्सेशन के लिए लायबल है। एफसीएनआर अकाउंट, अब इसमें क्या होता है कि आप जो है जो एनआरआई है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इसमें अपनी ही करेंसी, जो उस जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उसी करेंसी में वो अकाउंट को खोल सकते हैं, और जो इनकम इससे जनरेट होगी वो भी टैक्स फ्री होगी। और जो है फ़र्क देखो, यही फ़र्क है ना एनआरई में और एफसीएनआर में, कि अर्निंग्स जो हैं जो है उसी दोनों दोनों अकाउंट जो है वो उसी कंट्री में खुलवाए जा सकते हैं, लेकिन जो पहला अकाउंट एनआरई अकाउंट है वो इंडियन रुपी में मेंटेन करना पड़ता है। एफसीआईएनआर अकाउंट जो है वो उसी करेंसी में मेंटेन कर सकते हैं जिसमें वो रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ई कॉमर्स कंपनीज अमेजॉन फ्लिपकार्ट को जो है नोटिस दिया है, क्योंकि वो टॉयज़ बेच रही थी इन वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है। जो कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। तो ऑफ कोर्स ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक रेगुलेटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आती है। इनके एक चीफ कमिश्नर होते हैं, इसके पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होता है जिसके डायरेक्टर जनरल होते हैं। इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी एम्पावर किया गया है कि वो भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कोई भी कंप्लेंट आती है ऐसी। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बासमती राइस। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली पहली बार इंडिया में FSSAI जो है उन्होंने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो स्पेसिफाई किए हैं बासमती राइस के। और जो है स्टैंडर्ड्स क्या सेट किए हैं, कहा है कि नेचुरल फ्रेगरेंस होनी चाहिए,
कोई भी आर्टिफिशियल कलरिंग यूज़ नहीं होनी चाहिए, पॉलिशिंग एजेंट्स नहीं यूज़ होने चाहिए, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए। और जो है इसलिए किए जा रहे हैं ये स्टैंडर्ड सेट, ताकि कल को जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं या डोमेस्टिक भी यूज़ करते हैं तो अच्छा क्वालिटी का बासमती राइस जो है वो कंज्यूमर्स को मिल सके। और इवन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कोई काउंटरफीट जो है या फिर कोई नकली बासमती जो है फिर वो हम जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर वो वापस हो जाता है, और इंडिया पे अगर बहुत ज़्यादा ऐसा हो तो वेट बैन भी लगा देती हैं वो कंट्रीज़। तो इसलिए क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स डाले गए हैं। अब ये यूनिकनेस क्या है बासमती राइस की? ऑफ कोर्स ये हिमालयन फुटहिल्स में जो है उगाया जाता है, और इसका जो ग्रेन का साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, और इसकी यूनिक जो है अरोमा और इसका फ्लेवर होता है। इसको टेम्परेचर कंडीशंस चाहिए होती है 22 से 32 डिग्री सेल्सियस की, 150 से 300 सेंटीमीटर की इसको रेनफॉल चाहिए होती है, डीप क्ले या लोमी सॉइल चाहिए होती है, और टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माइनॉरिटी सिटीजन इन इंडिया। तो आपके पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो है 24 स्टेट्स जो हैं उनके व्यूज़ को सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट में, कि जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको क्या सिर्फ जो है यूनियन गवर्नमेंट ही नोटिफाई करे, आइडेंटिफाई करे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी करें, ठीक है। तो अब जो इंडिया में माइनॉरिटी स्टेटस इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट पास किया गया है, उसी के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज सी जो है उसके अंदर जो है 1992 के लॉ के अंडर जो है ये कम्युनिटीज़ को नोटिफाई किया जाता है कि वो माइनॉरिटी हैं या नहीं है। तो करंटली आज तक जो है 6 कम्युनिटीज़ को नोटिफाई किया गया है नेशनल लेवल पर कि वो माइनॉरिटीज़ हैं। जनरली स्टेट जो हैं वो अपनी सेपरेट स्टेट लिस्ट नहीं मेंटेन करती हैं, बट उसके में भी एक्सेप्शन है, जैसे महाराष्ट्र ने ज्यूज़ को एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी अपनी स्टेट में नोटिफाई किया हुआ है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देखते हैं इसके रिगार्डिंग। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को सिक्योर करना ज़रूरी है, और वो अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को कंजर्व करके रख सकते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा। और आर्टिकल 30 और 29 ये भी कहता है कि अब मतलब ये बताता नहीं है कि माइनॉरिटीज़ क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बताया नहीं गया है कि माइनॉरिटीज़ कहाँ क्या है। इसके जो है डिसीजन वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर छोड़ दिया गया, या फिर इवन स्टेट गवर्नमेंट पर भी। अब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी हैं जो कि ऑफकोर्स रिलीजन के बेसिस पर हैं, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी हैं जिनकी जो अपनी मदर लैंग्वेज या फिर मदर टंग के बेसिस पर जो है वो मेजॉरिटी ग्रुप से डिफरेंट हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Rural Health Statistics Report 2021-2022. So Ministry of this topic is important for your governance section. So Ministry of Health and Family Welfare has recently published the Rural Health Statistics Report for 2021 and 2022. It's an annual publication of Health Ministry, which has been in publication since 1992, and it gives us the data on health infrastructure in the country, including the manpower up to 31st March of every year. So this data is collected, not separately collected by the health ministry, rather the states and UTs, they upload this data on the health management information system portal, and the states also provide periodic reports to the on this portal, so that the citizens can get information regarding the availability of health infrastructure in the respective states and their respective locations. So what are the key highlights of this year's report? So this year's report says that each sub-center or primary health center and the community health centers, which have their norms that they would have to take care of this much population, at least this much of health centers should be there, so that for every 1 lakh population there should be at least a community health center, etc. But they are exceeding the limit, which means that we have a shortage of these health sub centers, primary health centers and community health centers, which need to be taken care by the state governments, of course, because the health is a state subject, we all know that. Okay, so the urban health statistics are also not very encouraging. There is a vacancy of doctors, pharmacists, lab technicians and staff nurses at the urban primary health centers, and there has been we have seen a rise of allopathy doctors. Almost 50% rise in number of allopathy doctors have been witnessed in the primary health centers since the launch of National Rural Health Mission. But there is an acute shortage of specialist doctors also, and there, apart from that, a shortage of female health workers and auxiliary nursing midwives has also been witnessed.
So the next topic is All India Presiding Officers Conference. This topic is important for your polity section. So 83rd All India Presiding Officers Conference was recently organized by the members of the legislative community, and they have passed the resolution. These members have passed the resolution, and they have basically, this resolution was the same that Vice President Jagdeep Dhankar ji remarked during this conference, and they have all endorsed those remarks that the parliament's sovereignty and autonomy cannot be compromised. So this was being referred in relation to the Supreme Court's rejection of National Judicial Appointments Commission law, which the parliament passed but the Supreme Court strike down, and thereby the resolution has certain highlights. We need to see those highlights now. So this resolution says that we all need to respect the boundaries of the constitution. We have to respect the principle of separation of powers, which says that there are predefined roles uh, of three organs of the state: the executive, the legislature, and the judiciary, and none of these organs should overreach each other, the powers or the roles of each other. Okay. Similarly, there should be a faith in the primacy of people of India, because these legislative bodies are representative of the people of India, and what they are passing, or what the law that they are passing, there should be certain faith regarding that, and judiciary cannot just overreach and strike down everything that these parliamentarians or legislators are passing. Okay. This resolution also says that we should evolve a code of conduct to rule the behavior of legislators, so that we can control the unruly legislators and their behavior. And there should be model uniform laws which could be formulated, and they should be reviewed comprehensively. Otherwise, the precious time of the legislature, both the state legislature and the parliament, gets wasted because of the behavior of these certain legislators. Also, it has been asked that political parties should build a consensus among themselves against any disruption in the House of Legislature, particularly during the question hour. And decorum and discipline should be maintained as a necessary requisite for the good functioning of the House. Other highlights are that uh, they have also all extended full support to project India as the mother of democracy during India's G20 presidency. So, what is All India Presiding Conference, Officers Conference? So, it is the apex body of the legislators in India, and this first conference was held in Shimla in 1921. So, we have recently completed the 100 years of this conference in 2021. So the next topic is Voice of Global South. This topic is important for your international relations. On 12th and 13th January, India has hosted the Voice of Global South Summit, and the Prime Minister has told the leaders of these developing countries that your voice is India's voice, and your priorities are India's priorities. So what is this term, Global South? So basically, these are the countries which were left out of the industrialization era. So generally, these countries belong to Asia, Africa, and South America, and that's why we are cooperating with each other. We call this South-South cooperation, and as recently as just now, we all have agreed that during the Russia-Ukraine war, we should not be compelled to take a stand, because we are not going to be dragged into either of the camps, either the Western camp or the Eastern camp. We do not want to be a part of it, because we were not part of any of the camp during the Cold War also. So, what is this Voice of Global South Summit? So, it's an initiative by India. India is basically leveraging its position as the current G20 president, and we have started hosting this summit under the first theme. The theme of this summit is unity of voice, unity of purpose. During the same summit, PM Modi has launched this Arogya Maitri project, which will be similar to what we did during the COVID period, by by giving medical supplies to the needy countries. We have pledged that we will also be providing essential medical supplies to any developing country would be affected by natural disasters or humanitarian crisis.
So the next topic is non-resident accounts. This topic is important for our economy section. So non-resident account types like NRE or NRO have been allowed by the NPCI to use UPI on their international mobile numbers. So, but of course, there would be the provisions of Foreign Exchange Management Act. These provisions would apply so as to dissuade any black money to be and to enter into the Indian economic system. So what are the different types of NRE accounts in India? First is of course the NRE account, that is the non-residential external account, in which the NRIs can open and maintain this account in the country where they live, okay, or where they reside, but this account shall be held in Indian rupee denominations. Withdrawals can be made in the currency in which where the NRI is residing, and the income from this NRE account is tax free. Similarly, there is another account called NRO account. So this is the non-residential ordinary account. Basically, this account is opened by an NRI in India so that he can take care of any of his earnings from India, like from rent or dividend, etc. So because these earnings are done from India or from the economic activities in India, that's why the interest which is earned from from the income is liable for taxation. But the another account is foreign currency non-residential account. So basically this is the account where the NRIs or persons of Indian origin can make deposits in their respective countries, and they can use the currency of their country also, and income from this account is also tax free. The rate of interest is generally same, it does not fluctuate. Mainly the currency rates or the market rate of foreign currencies are applicable to it. Okay, so the next topic is Central Consumer Protection Authority. This topic is important for your governance section. So recently, Central Consumer Protection Authority has issued notices to e-commerce websites for selling toys in violation of standards which have been issued by the central government. So this Central Consumer Protection Authority is empowered to investigate unfair trade practices which are violating consumer rights. So this is basically a regulatory body which was established by the Consumer Protection Act of 2019. It is functioning under the Ministry of Consumer Affairs. It has its own chief commissioner. It has its own investigation wing also, which is headed by a director general, and even the district collectors have been empowered to investigate complaints of violations. So the next topic is basmati rice. This topic is important for our economy section. So recently, for the first time in the country, FSSAI has specified certain standards for identifying basmati rice. So as per this standard, basmati rice shall have its own natural fragrance. It should be free from artificial coloring, polishing agents, or any artificial fragrance. So these standards are being mentioned because it would establish fair trade practices in the trade of basmati rice, and it would also protect consumer interest both domestically and globally. So what is the uniqueness of this basmati rice? So generally it is cultivated in Himalayan foothills of the Indian subcontinent, and it is very famous for its long grain size, fluffy texture, and even the aroma, unique aroma and flavor. So the climatic conditions which are required for basmati rice is that it requires a temperature of 22 to 32 degrees Celsius with high humidity. Around 150 to 300 centimeters of rainfall is required. Deep clay and loamy soil is required, and the top rice producing states are mentioned here in a decreasing order. So West Bengal is the top producing rice state. So the next topic is minority citizen in India. This topic is important for your polity section. So central government has recently submitted the views of 24 states to the Supreme Court with respect to recognition or identification of religious and linguistic minorities in the country, and whether they should be identified and notified by just union government or even the state government. So who gives minority status in India? So central government is generally empowered to give a minority status in at the national level, and a National Commission for Minorities Act was passed in 1992 to do the same. Section 2 subsection C of 1992 law empowers the central government to to identify these national level minorities. So central government has a total of has identified a total of 6 communities at the national level who are considered as minorities now. So generally states do not have their own separate list, but there are of course certain exceptions like Maharashtra, which has identified or notified rather Jews as a minority group in the state.
So, what are the constitutional provisions? Of course, with respect to minorities, we have this Article 29 and 20 and Article 30, which is talking about keeping the or preserving the distinct language, script, or culture of these minorities, and there should be no discrimination with respect to on the ground of religion, race, etc. And the Constitution does not define or specify the term minorities in India. So there are two types of minorities. First is, of course, the religious minorities, which is, of course, self-evident. And there is linguistic minorities also, who are a class or group of people whose mother language or mother tongue is different from that of the majority groups. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.